Good evening and a warm welcome to everyone listening today. I am Tamil along with my বিজ্ঞান প্রদর্শনী হলো একটি ইভেন্ট যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রদর্শন করে। এই প্রদর্শনীতে শিক্ষার্থীরা তাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রকল্পগুলোকে চিত্রিত করে। বিজ্ঞান প্রদর্শনী শিক্ষার্থীদের প্রতিভা দর্শনের একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম। বিজ্ঞান প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রদর্শন করে, যাহাতে উদ্ভাবনী ধারণাগুলোকে রূপ দিতে পারে, অপরের অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে, তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে পারে। আরও সেই প্রতিভা প্রদর্শনী করে দেখালো প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে ট্যালেন্ট ছাত্রছাত্রীরা। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শিলচর প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও ফুড ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহ দিতে আনন্দমুখর পরিবেশ ও উৎসাহ উদ্দীপনায় শিলচর প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও ফুড ফেস্টিভ্যাল শুক্রবার সন্ধ্যায় উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন বরাক ভ্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মনসুর হিলাল মজুমদার, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর প্রণব সরকার, সোনাই এমসিডি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর খালিদ আজম মজুমদার, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মিতু বিশ্বাস, প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ বশির আহমেদ, ভাইস প্রিন্সিপাল ডক্টর এম খুরশিদ, পিয়ালি নন্দী, প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ডক্টর সোহেল আহমেদ খান, এনইউ তালুকদার ডক্টর জিয়াউদ্দিন মজুমদার, ডক্টর আবহাম সরকার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য করতে গিয়ে বরাক ভ্যালি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ মনসুর হিলাল মজুমদার ছাত্র ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, লক্ষ্যকে সামনে রেখে সঠিক দিশায় এগিয়ে যেতে হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে এরকম বিজ্ঞান প্রদর্শনী, বিশেষ করে তরুণদের জ্ঞান চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে এবং তাদের উদ্বোধনী ক্ষমতাকে বিকশিত করার অপূর্ব সুযোগ এই ধরনের প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানের প্রতি শিক্ষার্থীদের ভীতি দূর করার পাশাপাশি তার বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলার মধ্য দিয়ে সৃজনশীল ও উদ্বোধনী চিন্তা শক্তি জাগ্রত করাই এই বিজ্ঞান প্রদর্শনী। তিনি আরো বলেন, বিজ্ঞান মনস্ক শিক্ষার্থীদের নতুন উদ্ভাবনীর অবদানে একদিন ভারত বিশ্বে উন্নতশীল দেশের সম্মান অর্জন করবে। এই বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করা বিজ্ঞানীদের মেধাকে বিকশিত করতে পারলেই তারা তাদের সৃজনশীল চিন্তা চেতনার মাধ্যমে দেশকে আরো এগিয়ে নিতে পারবে, এমন আশা প্রকাশ করেন অধ্যক্ষ মনসুর হিলাল মজুমদার। এদিকে বিজ্ঞান প্রদর্শনী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের মেধার বিকাশ উপস্থাপন করতে সক্ষম হওয়ায় অতিথিরা তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন আর আগামীতে অভাবনীয় সফলতার মাধ্যমে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়ে তাদের নিজের এবং প্রেসিডেন্সি সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের সুনাম রাজ্যব্যাপী ছড়িয়ে দৃষ্টান্ত গড়ে তুলতে উৎসাহিত করে বক্তব্য রাখেন প্রত্যেক অতিথিরা। এদিন উদ্বোধনী সভা শেষে অতিথিরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মেলার বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। ছাত্রছাত্রীদের তৈরি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়ের উপর প্রায় 82টি স্টল দেওয়া হয়। এতে এক বর্ণাঢ্য উৎসবমুখর পরিবেশে অনাবিল আনন্দে গা ভাসিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা। এদিনের ফুড ফেস্টিভ্যালে আকর্ষণীয় হিসাবে ছিল পড়ুয়াদের নিজের হাতে তৈরি সুস্বাদু খাবার, যেমন কেউ বানিয়েছে নলেন গুড়ের পায়েস, কেউ পাটিসাপটা, কেউ বকুল পিঠে, কেউ সুজির পিঠে, কেউ বা নারকেল নাড়ু। ছিল মোমো, চুঙ্গা, বিরিয়ানি, চাউমিন থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্টলে থরে থরে সাজানো মিষ্টি, রসমালাই, চুঙ্গা পিঠে, পোলাও, পায়েস, কেক, আলু কাবলি, পাপড়ি চাট। চোখের সামনে জিভে জল আনা খাবার দেখে দর্শকদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। ছাত্রছাত্রীরা একে একে দর্শকদের হাতে সেই সব খাবার তুলে দেয়। হাইলাকান্দি থেকে রাহাতুল আক্তার, বড় ভুইয়া রিপোর্ট। So this is the rope we made from the fiber by this machine. By attaching with this machine, the fiber is you can see is tensile in strength and very rigid. And and the price very less. It can be easily affordable by common people. So it has golden. We have golden prospect in near future. We will try to do more research and development on that, specifically on that fiber. We will try to do improvement in our machine for comparatively to better to make us success in commercial viability. We try to carry more research and development on that specifically. Thank you. If you have some query related to this, you may ask. So I will be pleasure to answer. The cost that we एक्चुअली पहले बात है initial मशीन का कॉस्ट कितना होगा, मशीन का, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में सबसे पहले जो बात आएगी
कि इस प्रोजेक्ट को Doing this machine, the cost of this machine is 20,000. ओके It's very less compared. ओनली 20,000 Only 20,000. Okay. Only 20,000. And अगर हम पूरा देखें कि अप्रॉक्स अगर हम इसका सेटअप अगर मेरे घर में अगर सपोज मैं मान लो मैं बिठाना चाहूँ एक आम इंसान इसको कहाँ it is 23,000 around. ओके Around 23,000. ओके मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि 20 से 30 हज़ार के अंदर एक आदमी 20 से बिटवीन 20 to 30 मतलब आप एक सेटअप को लगा सकते हैं और इससे आप एक छोटा सा बिजनेस का इनिशिएटिव रख सकते हैं इज इट Yes, sir. ओके विच इज़ वेरी नाइस एंड इट्स प्रोबेबली द फ्यूचर ऑफ Yes, sir. ऑनेस्टली We have golden prospect. Raise fund to improve in it. We want to enhance the quality of this machine. वेरी फर्स्ट टाइम कि किसी बनाना के पेड़ से आप लोगों ने एक जूट जैसा पूरा एक रस्सी तैयार करी है जो हमारे मतलब दैनंदिन जीवन में बहुत कारगर साबित होने वाली है Yes, sir. वेरी गुड वेरी नाइस And Shayon, and we made a project on the under the guidance of under the guidance and mentorship of Professor Ahmad Khan. And so this is a banana fiber extraction machine. With this machine, we use the biomass. This is the waste material we use and recycle it and convert into a useful resources. That is fiber we obtain. And this fiber that we obtain after extraction, it is various uses in various industries. So it is a commercial viable substance. The fiber we obtain, it has many uses such as textile. We can use to make fabric, garments, and many other things. Specifically here we are making rope to show you all this. The fiber is how much useful. So in this step to produce the fiber this is the front roller. This is a front roller where we insert the pseudo steam through which it feeds the roller drum. The roller drum that is rotating in high speed that plunge and stress on the pseudo steam and convert into separate the residue and the fiber. And the residue is converted into biochemical and other uses. It used to improve the soil quality, but the fiber we obtain is completely biodegradable. And the process for obtaining this fiber is very less time in consuming, and the fiber we obtain is renewable. The fiber we obtain is biodegradable, and the source is required to make this fiber is non-renewable source of energy. Okay, just show us how. Demonstrate us. You can demonstrate it in Bengali also. This substance you are watching this is the fiber we obtain after the extraction from the pseudo steam. It is biodegradable as I said earlier, and it has many uses in the machine through which we obtain this is less effective, cost effective, effortless also than manual extraction. This fiber today here we will show you the fiber to make it rope. So we will do hair weaving. Dr. Suhail Ahmed Khan. I basically welcome all my dear friends, parents and judge to Presidency Pratibha on Nation. Actually इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरा स्टूडेंट्स का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है. ये ख़ास करके एग्जीबिशन का जैसा नहीं है, ये टोटली किसी का ज़िंदगी बदल भी सकता है इस प्रोजेक्ट के द्वारा. क्योंकि हम लोग जो देखते हैं कि होल बराकवेली या असम में जितना वेस्ट मटेरियल बनाना ट्री से निकलते वो लोग कोई जगह पे यूज़ नहीं करते. बनाना काटते हैं उसके बाद ये फेंक देते हैं. पर हमने सोचे हैं ताकि इसके बारे में कुछ रिसर्च शुरू की जाए. तो मैं मेरा स्टूडेंट्स को लेके कुछ रिसर्च पेपर पढ़ा था और उस रिसर्च पेपर में इसके बारे में जिक्र किया भी गया है. लेकिन एक बात है, उन लोगों ने जो बनाया है मशीन उसका प्राइस नियर अबाउट 140 लाख है.
1,40,000 है, लेकिन हमने जो बनाए हैं इसका प्राइस ओनली 20 to 30,000। दूसरा बात है ये कोई भी यूज़ कर सकता है, एक लेमन भी जाएगा ना तो वो यूज़ कर सकता है। और तीसरा बात है आजकल के ज़माने में हम लोग जब पोल्यूशन के बारे में सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है पॉलीथीन मटेरियल, सो हम पॉलीथीन मटेरियल को रिप्लेस कर सकते हैं बाय दिस फाइबर ऑफ बनाना, क्योंकि इससे हम लोग बैग बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे आइटम्स, फैंसी आइटम बना भी सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप सभी मीडिया के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हमारा होल वर्कवेली बोलिए या आसाम में बोलिए, अगर कोई ये सेटअप चाहता है तो हम लोग कुछ मिनिमम बजट में देंगे, सिखा के भी देंगे। उसके बाद उससे जो फाइबर निकलेगा वो फाइबर भी कहाँ सेल करेंगे वो भी हम लोग पूरा डिटेल्स आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। इस फाइबर का इतना बड़ा एक खासियत है जो बाकी फाइबर में नहीं है। एक खासियत ये टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब खींचने से भी वो लंबा नहीं होता है। अब दूसरा टाइप का मटेरियल देखेंगे जैसे नायलॉन हो गया, वो सब खींच जाता है, खींचने से लंबा हो जाता है, लेकिन ये लंबा नहीं होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसका प्राइस बहुत कम है। लोग ऐसा फेंक देते हैं, वो सब उठा के हम लोग ये अगर बना देंगे तो ये इतना एक इनोवेटिव बिजनेस होगा कि जो लोग बेकार रहते हैं ना, तो मैं स्टूडेंट्स को जस्ट यही बोला था कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मुझे दूसरी जगह जाके नौकरी करना है, ये सोचना है कि मैं कैसे दूसरों को नौकरी दूं। और ये जो प्रोजेक्ट है अगर तुम लाइफ लॉन्ग इसको लेके चलोगे तो इसमें बहुत सारा मुनाफा होगा, बाकी को भी बेनिफिट मिलेगा। विद दिस फ्यू वर्ड्स, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक छोटा सा सवाल है। हाँ बोलिए। इस ड्रीम असल में मैंने पहले मेरा सभी टीचर्स को एक बात बोला था कि हमारा प्रोजेक्ट साइंस एग्जीबिशन जैसे एग्जीबिशन ना रहे, उसमें उठ के आप लोग सोचिए ताकि वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करके कैसे नया कुछ बनाया जाए। और वहाँ से उन लोगों को ज्ञान देते देते खुद में भी थोड़ा एक सोचने का मौका आया कि ताकि क्या कर पाऊँ, स्टूडेंट्स को भी सिखा पाऊँ, लाइफ में वो लोग भी कुछ अच्छा कर पाए। उसके बारे में मैं सोचते सोचते बाद में देखा यही एक प्रोडक्ट है जो मेरे गांव में भी बहुत सारा है। और मैं स्टूडेंट्स को बोला था ये हम लोग बेकार जाने नहीं देंगे, नियर फ्यूचर इसको लेके हम रिसर्च करेंगे। मेरा गांव में मेरा घर है, वहाँ मैं ये बैठा दूंगा इंशाल्लाह। आप लोग अगर दुआ करेंगे, वहाँ से मेरा जितना लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, इन लोगों को मैं यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूँ। उससे जो फाइबर निकलेगा उस फाइबर को बाहर से भी सेल, बाहर का कंट्री में भी सेल किया जाता है ये सब फाइबर। creates energy, and this kinetic energy is from this electricity, and this light is glowing up. Okay. So basically you have converted kinetic energy into electrical energy, yes. Okay, very good. So whether we can use this one to create or to generate electricity? Yes. In agricultural purpose, we can use this in agricultural purpose. Thank you. Water. Here we took one beaker and we pour some water and we add NaCl plus H2SO4. We add it because it increases our conductivity. So now it is our graphite, it's electrode, it is good conductor of electricity, so we take graphite. Next we do. So sir, here our battery, this negative side is called cathode and positive side is called anode. So when we connect, so here our splitting of water occurs. Here this side our hydrogen bubbles and this side our oxygen bubbles. Hydrogen is small because the ratio of water is 2:1. So by this process we are doing the production of hydrogen gas. Okay, the main aim is you are producing hydrogen gas by the process of electrolysis. Yes. And what is electrolysis? Sir, breakdown of water. Breaking down of Water into hydrogen and oxygen. Then where the oxygen will go? Sir, oxygen is here. It will Escape into the atmosphere. Thank you very much. Thank you so much, sir. ग्रुप मेंबर्स। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को ऐसा डिज़ाइन किया है जैसा कि हमारा मतलब यह है कि रोड को सेफ्टी कैसे दे और एक्सीडेंट से रोड को कैसे बचाए और रोड कैसे ख़राब आता है। वो गाड़ी जब जाता है ना वो बहुत ओवरलोड ले लेता है, इसी कारण रोड डैमेज होता है और एक्सीडेंट भी बहुत होता है। देखिए सर, ये इतना लोड नहीं है, कम लोड है, मतलब ये रूल के हिसाब से जा रहा है तो आसानी से चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर ये जब ओवरलोड ले लेगा ना
ओवरलोड जब ले लेगा तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे एक माइक्रो स्विच लगा हुआ है, इसके लोड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, वो अपने आप प्रेस हो जाएगा, यहाँ पे सिग्नल आएगा, सर्वो मोटर अपने अपने मूव करके रोड को क्लोज कर देगा। जैसे कि देखो सारे ऐसा होता है। फिर यहाँ पे अथॉरिटी से लोग बात करेंगे इसके साथ, इसके वेट को कम कराएंगे, फिर ये लोग परमिशन देंगे इसको आगे जाने के लिए। परमिशन ये अपने आप ओपन हो जाएगा, फिर ये जा सकता है। हमारे मेन मतलब ये है कि हम इसको रोड्स को कैसे सेफ्टी रखें। हाँ, कि हमारे यहाँ इधर बहुत सेफ्टी रखे, इसीलिए आपने अलार्म लगाए हैं। हाँ, सर। ताकि जब ओवरलोडेड है गाड़ी को जाने नहीं देंगे, जब तक लोड कम ना हो जाने नहीं देंगे। वेरी गुड। अंडर द मेंटरशिप ऑफ होम दिलवर सर वेरी गुड प्रोजेक्ट दिलवर सर। क्या खासियत है इसमें और क्या करना चाहते हो? बस दो चीज। यू कैन स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी? ओके, इंग्लिश। टेल। Hello, my name is Nazia Mehzabin Laskar. We are from class 11 science. They are my team members. We have made a servomotor controller using joystick sensor, and this system is known as embedded system. The brain of this system is microcontroller. Here we have put it a C program. According to this program, the motor is working. We have connected these wires with these pins. There are two types of pins: analog pins and digital pins. When we move this joystick, the motor will move. The application will shown by my friend. She told about our project. There are various applications of servo motor. Here we have shown only two of them. We have made a building where construction is going on, and another one is toll gate. To lift heavy object from the down to the up, we use a joystick here to control this servo motor. Just show us the working. Yeah, let me show. When you move the joystick right, then the servo motor of the toll gate will move. You can see this type. Once again. Yeah, okay. मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या बनाए हैं आपने? सर्वो मोटर। हाँ, सर्वो। उससे क्या हो रहा है वो दिखाओ पहले। वर्किंग जैसे टोल गेट में हमने इसको दिखाओ ना। टोल गेट में वो जाने नहीं देगा, वो अलाउ करोगे जस्ट वही? Yes. हाँ? Yes, sir. Automatic? Like this is a building. Not automatic, but we use joystick to control this servo motor. Servo motor. Yeah. So like this is a like you can understand this. Okay, it this is a- building is under is in construction. Then and if we put a joystick here and we can lift heavy objects from the down to the up, it will be very helpful. And moreover, while using this servo motor, we can use in mini robots. okay. The function is like this. Whenever you are working, then Yes, this gate will be locked like this. Yes, sir. Whenever you are not working, then it will be automatically on. On, yes, sir. Show us once again. Yeah. Right. This type. Thank you very much. Thank you, sir. Zulfikar Ahmed and I, along with my teammates, have designed a model of hydropower plant, Okay. which basically shows the process of generating electricity from the potential energy of water. Water. Okay. So there are so many types of hydropower plants, and we have designed reservoir based, which is basically called a dam. And inside the dam, the water stores, which represent the potential energy of water, and then the reservoir is connected to a penstock, which flows the water to the turbine. And as the water is yet to be released, it shows the potential. It shows the kinetic energy, and by using the kinetic energy, we Okay, rotate basically you are converting kinetic energy into electrical energy. Let us show how. Okay, so when the water is flows from there, the water flows and the turbine is rotate, and the turbine is connected to So a right now shaft. you are rotating the turbine without water. Yeah, right now as we can't put water, so as our project will totally disguise, so that's why we are not using water. We have just you can show us the demonstrator. Give some Yeah. water here Okay, sir. of the motor, and let us to show how the electricity is generated. Okay, sir. Give some water here. And how we will understand the electricity is generated? How? You can see there is a bulb is Shop there, lage do. हाँ, shop there, lage do.
as the bulb is blinking inside the hole. the room is blinking. Yeah. Very good. Very good. Okay. Thank you very much. And one more thing, our model not only shows the significance of hydropower plants, but also shows the significance of renewable and sustainable resources. Thank you so much, sir. Morning, sir. My name is Rajveer Singh. I read in class 11. So we are demonstrating here total 5 projects. So my one is, sir, color change. Sir, so in this process, sir, I'm going to show you, sir, color change in a reaction. So first of all, sir, we will take some KMnO4, which is also known as sodium potassium permanganate. We will take some KMnO4 here, sir, in a beaker. And then, sir, it is neutral, sir. We will put some acid so that the medium become acidic. This is, sir, H2SO4 sulfuric acid, in order to make the medium acidic. Here the medium becomes acidic. Afterward we will put, sir, H2O2 hydrogen peroxide in it. So when H2O2 reacts with KMnO4, the purple color gets faded. Here you can see, sir, small bubbles are created. It's O2. When KMnO4 reacts with H2O2, O2 is released, and manganese in this reaction gets reduced from +7 to +2. That's it, sir. The color is fully reduced. Thank you, sir. Assalamu alaikum. So my project name is Human Circulatory System. We made it. So first of all, we should know the answer of what is circulation. Circulation is the supply of oxygen, nutrients, hormones throughout the body, and it releases out the gas, that is carbon dioxide, produced by our body. So the human circulatory system has 3 components. These are blood vessels, and heart. In the middle of this remarkable process, we have our heart, which is mesodermally derived organ. The heart basically has 4 chambers. In the right side we have right atrium and right ventricle. In the left portion we have left atrium and left ventricle. Between the right atrium and right ventricle we have the tricuspid valve, and between the left atrium and left ventricle we have the bicuspid valve. There is also one valve which connects the aorta and left ventricle, that is known as semilunar valve. Now I will talk about the circulation of the blood. So at first the deoxygenated blood from the body enters the lungs through the vena cava to the right atrium, and through the tricuspid valve it goes to the right ventricle. As the blood is deoxygenated, so it is needed to be oxygenated, so it is sent to the lungs for oxygenation. In the lungs, the partial pressure of oxygen is higher than that of partial pressure of carbon dioxide. After going in the lungs, the exchange of gases takes place, and the oxygenated blood is again sent to the heart. The oxygenated blood comes to the heart through pulmonary vein and in the left atrium, and this blood through the bicuspid valve goes to the left ventricle. As this blood is oxygenated now, so it is sent to the body through the aorta. Now I will talk about the sound that is produced by our heart. The heart produces a lub-dub sound. So how it is produced? The heart has basically 3 valves. These are tricuspid, bicuspid and semilunar. When the tricuspid and bicuspid valves are closed, the sound is produced lub, and when the semilunar valve is closed, the sound is produced. So our heart basically produces lub-dub sound. Now I will give short brief explanation about the human lungs. There are 2 human lungs, and they has a membrane known as pleural membrane, and between the lung surface and the pleural membrane we have the pleural fluid. This extended tube is known as trachea, and this white portion is known as the cartilages. These cartilages provide flexibility to the trachea because if this was not present, then it will be collapsed.
So the air is taken through the nostrils and it goes to the lungs, and after going to the lungs, the exchange of gases takes place and we release of the carbon dioxide. So thank you. This is all about the human circulatory system. Thank you, sir. Karmin Chaudhary and I am from class 9. Today we have made Hyderabadi biryani, and it is a famous dish of Hyderabad. We have used chicken, basmati rice and all the masalas to make this rice, and it is very tasty and delicious for all the people who have ate here. And thank you. Our mentor making this dish. My name is Samia Akhtar Lashkar. I am the student of Presidency Senior Secondary School and AR2 second year, HS second year. सर ये हम लोगों ने चिकन मोमो बनाया है पहले, उसके बाद मतलब हम लोगों ने एग का पकौड़ा बनाया है, उसके बाद हम लोगों ने रसमलाई भी बनाया है ये और My name is Jakaina Akhtar Bolashkar of class 11, and they are my team members. Of Presidency Senior Secondary. Yes, sir. Of Presidency Senior Secondary School. We have made a refractive telescope using some tools like this is the PVC pipe. And here is the objective lens. Here we have used an achromatic doublet lens to reduce color distortion. It is a mixture of both concave and convex lens. It collects the parallel light rays coming from distant sources, and here the image is formed, and the image is further magnified by the eyepiece lens. And the eyepiece lens has a focal length of 25 mm. The light rays travels from this tube, and then the image is formed there. This is the this is the focuser. And the focal length of the objective lens? Focal length of the objective lens is 700 mm. And what do you mean by tube length of a telescope? Tube length of the telescope is 52 centimeters, sir. So this is the distance between? Distance between the objective lens and the eyepiece. Whether it is the distance between the focus of objective and focus of eyepiece, or just it is the distance between eyepiece and objective? Eyepiece and the objective, sir. Not the distance between focus of eyepiece and focus of objective? Yes, sir. Which one is correct? Focus of eyepiece and focus of objective lens. Not the distance between? Objective lens and eyepiece. So Yes, sir. we can see the image. Yes, sir. But right We now have. it's not possible here. Yes, sir. Because of excess light. Earlier we have seen. Yes, sir. Earlier we have seen the moon, the craters of the moon in very detailed version, and today we have seen the planet Venus. Thank you very much. Yes, sir. It is our project Earthquake Alarm. It can be used to detect and warn people of an earthquake, so that we can protect our property. We can fix it outside the room also, outside our house also. That means whenever earthquake is there, then an automatic alarm system will be there. Yes, sir. Yes, So sir. demonstrate us how. In this way, it rings Very good, very good, whenever earthquake will become. very good. Okay, very good. Thank you, sir. Thank you very much. Noima. We are from HS first year. We have prepared a model from the biofield, which is human brain and eye. They are my team members. They will explain the functions. So this is our human brain, and it is the central processing organ of the human body. And the human body is further covered by a hard layer, which is called the skull. Now the brain is divided into two parts: the right hemisphere and the left hemisphere. And again, the brain has more major division, which is the forebrain, midbrain and hindbrain. So now the further explanation will be done by him. Now if you see the brain laterally, then it is subdivided into the four lobes, that is, you can see occipital lobe, temporal lobe, frontal lobe, and parietal lobe. So now I will be explaining the functions of first each lobes one by one.
So occipital lobes helps in the vision, colors and the blindness. Which one? This one? Yes sir, this is the occipital lobes. Help us. Occipital lobes The color helps. different for Yes identifying sir. different colors. Okay. Vision, helps in vision. Okay, this one. And next is the cerebellum, which helps in the balancing. Like for example, cerebellum is used while cycling, and it helps in the balancing of the muscles of the body and control and coordinations of the body. And next is the thermal lobes, which helps us in hearing and understanding the languages and behavior and memory, expressions, etc. And next is the ferient lobes, which helps in the sensations of vision, understanding the relations between each other, and brain function, and the further brain function will be explained by her. That is the explanations of the human eye, how it works according to the brain. When light is gets inside the eyes, how it works. Further Now- explanation will be done by her. Now here we are having the eye. So the eye is one of the organ of a human body, and whenever the image enters the eye, it acts like a camera. Now here we are having the projection from here to from the iris. The images goes to the retina, and from the optic nerve it is passed to the optic chiasm, which is the junction, and again from the tract it is gone to the thalamus. Now the signal will go from the eye to the brain, which is our occipital brain. This one is the lobe, occipital lobe, and here the function takes place, and by this it will tell what is the image. So Innovative. बोलो carry on. अफजल भाई लिक्विड नाइट्रोजन ये -196 196 Celsius minus 196 Celsius लिक्विड नाइट्रोजन है। ये सर हम स्मोकिंग इफेक्ट या फूड मटेरियल या फिर सर हम फूड प्रिजर्व करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर यूज़ कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह से जब फूड लाया जाता है तो सर ये इसके जरिए लाया जाता है ताकि फूड खराब ना हो। और सर ये हम लिक्विड फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ज़्यादा हार्मफुल है अगर हमारे अंदर चले जाए, ज़्यादा हार्मफुल है। किसी चीज़ पे मिला के जैसे कि हम किसी के थ्रो यूज़ कर सकते हैं। आप स्टूडेंट साइंस का स्टूडेंट है ना? हाँ सर। अच्छा, कौन सा ईयर में पढ़ा है? सेकंड ईयर। बहुत अच्छा चीज, इनोवेटिव आइडिया है। सर को दिखाओ। बहुत अच्छा चीज है। खाने से नहीं होगा। हम सर को दिखाओ। अच्छा सर को जैसे निजाम सर को ऐसे नहीं आप तो हम ऑलरेडी खा के वो मारिए ना। तो इनोवेटिव। अच्छा हमका Can you describe us what is this? Yes, I can describe. Good evening, everyone. My name is Anifa Siddika Mazunda. I am from class 3. Today I am going to tell you about my human evolution model. This is my ancient life and this is my modern life. In ancient life, first people used to live in caves. Then they upgrade themselves into kacha houses. In ancient life, there was not electricity. That's why they use lamps and all. This is a well. Early human take water from it. This is a bulldog card. It is very famous in India. Now I am going to tell you about my modern life. Then early human upgrade themselves into kacha houses. Then they more upgrade themselves and they live in buildings and apartments. This is a hospital and this is a slide, seesaw and a swing, and it is a children park. Thank you. I hope you like my little model. Thank you. Who prepared this? Me, my mom, my aunt and my sister. Thank you. What you use for making this?
I use waste cardboards and waste stones, some clothes and some things also I use, and with this also the same I use. Thank you. And with thermocol. ভালো লাগছে, বাচ্চারা উৎসাহ হয়েছে এটা, আর গার্জেনরা ইনভেস্ট করছেন এর লাগে ভালো লাগছে। আর এগুলা ফুড স্টল করছেন, বাচ্চারা বানাইয়া আইছে, এটাও ভালো লাগছে খুব। প্রোগ্রামটাও ভালো লাগছে। আপনার মেয়ে কিতা বানাইছে তোরা একটু ডেসক্রাইব করতে পারবেন? তাই এনসিয়েন্ট এন্ড মডার্ন লাইফ এটা আপনি হেল্প করছেন? ইয়েস, আমি হেল্প করছি আর তাই আন্টি হেল্প করছেন আর পাপা। আপনি কিতা করেন? আমি হাউস ওয়াইফ। কিতা দিয়ে বানাইছেন এটা? এগুলা যে পাথর, এরপরে কার্টুন, থার্মোকল, এরপরে ঔষধের যে প্যাকেটটা শাড়ি দিছি, মানে দুইটা একসঙ্গে ফারা যায় না। প্রাইভেট একটা স্কুলে আমি টিচার আসলাম, আর মানে বিয়ার পরেও করছি, বাচ্চা কাচ্চা যে সময় নেনি, পরে দুইটা ফারা যায় না, মানে হাউস ওয়াইফ হিসাবে রইয়া গেছে আর স্কুলটা ছাড়ি দিছি। থ্যাংক ইউ। behalf of Presidency Senior Secondary School, welcome all of you from the core of our